गुड इवनिंग गाइज, नाउ कैन यू हियर मी? कैसे हैं आप लोग? आई होप यूर ऑल एबल टू हियर मी। सबको आवाज आ रही है? प्लीज गिव अ हाई। सो फॉर मी द वीडियो इज नॉट कमिंग। आई एम गुड, यू से। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। चलिए, थैंक गॉड सबको अब आवाज आ रही है एंड एवरीथिंग इज फाइन। द वीडियो इज कमिंग, राइट? I hope you are able to see the video as well. Error? No, I don't think there should be an error now. Now everything is working fine. It's working fine, right? You can confirm? Yeah. Okay. So चलिए, आज हम एक टॉपिक के साथ हैं. I am very good. दीपक, you say? Yeah. So आज हम एक बहुत important टॉपिक के साथ यहाँ पे आए हुए हैं. And that important topic is important mechanics question. टॉपिक में important है, देखिए. Isn't it? और पिछले बार भी आपने इस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था. काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि मैकेनिक्स जो टॉपिक है फिजिक्स का, इतना बड़ा वास्ट टॉपिक, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं, राइट? कैन यू स्पीक फुल्ली इन इंग्लिश ओनली विद नो हिंदी मिक्स? सी, फुल्ली इंग्लिश वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर हिंदी यूजर्स एंड complete Hindi, I understand, creates a problem for our South Indian users. So you would have to somewhere settle down between the two, okay? Fix your error. I think it's fixed now, Shweta. You are able to hear me now. Initially it might be showing some error. Yeah. Okay guys, तो शुरू करें मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन. चलिए, अब जैसे ही मैकेनिक्स वर्ड याद आता है, सामने आता है आपके, तो कौन सा चैप्टर याद आ जाता है सबसे पहले? वेरी ऑनेस्टली बताइए. उसको कह सकते हैं फादर ऑफ ऑल चैप्टर. पूरा मैकेनिक्स अपने आप में कंटेन करता है वो चैप्टर. डाउट्स हैं? डाउट्स तो देखिए इंस्टा सॉल पे पोस्ट कर दीजिए. लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. सी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी अकोमोडेटेड इन अनदर चैप्टर. एक और ऐसा चैप्टर है वेयर यू कैन अकोमोडेट द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन दैट. यू कैन अकोमोडेट एनर्जी इन दैट, सर्कुलर मोशन and center of mass. Everything can be put in that single chapter. Rotational, exactly, father of all chapter, rotational dynamics. तो पहला जो मैं इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ इन मैकेनिक्स इज ऑन रोटेशनल. एंड गेस व्हाट, रोटेशनल में भी कई टाइप हैं, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर यू हैव अ रॉड एंड द मोशन ऑफ रॉड इज हैपनिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई. सो लेट्स हैव अ लुक कि वो क्वेश्चन क्या है. Let's have a look now. So here is the question, guys. Please give it a read and then we'll discuss it. Everyone is able to see what is written? I hope everyone is able to read whatever is written. Yeah. I think one option is missing for you people. So are you all able to solve this question? क्या सबसे क्वेश्चन हो रहा है? Let me see. थर्मोडायनेमिक्स प्लीज सर. थर्मोडायनेमिक्स भी करेंगे, नो वरीज, एक क्लास थर्मोडायनेमिक्स को भी देंगे. सर कई बार क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते. ओके, आंसर्स नहीं मिलते. प्लीज बी रेगुलर इन आंसरिंग डाउट्स. यस दृष्टि. So our experts are there on InstaSol app. They are constantly looking at your doubts. So whenever they feel there is a doubt, they immediately try to solve. But since we have plethora of questions coming up on our app,
Sometime it might get delayed, but most of the time they try. Okay, yeah. So let's begin. Did anybody of you got any option in this? किसी का कोई option आया इसमें? Anything from your end? A, B, A option. सर टॉपिक क्या है? मैकेनिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम. तो you would see different topics of mechanics together. Option C. Okay. क्या एक ही आंसर आ रहा है सबका या मल्टीपल चॉइस भी आ रहे हैं? बिकॉज दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गाइस. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर करेंगे सो यू आर बाउंड टू गेट मेनी ऑप्शंस, राइट? तो बड़े ध्यान से देखिए कि क्या मल्टीपल ऑप्शंस मैच कर रहे हैं या नहीं. Okay, so shall we discuss? Sir, C, but we can't see the D option. Okay, so D option you're not able to see. I'll dictate it for you. D option is saying when the bar makes an angle theta, like in this new position with vertical, the displacement of its midpoint is proportional to 1 minus cos theta. They are talking about displacement of midpoint. कि midpoint का कितना displacement हुआ है when the rod has become like this in new position. So midpoint obviously would have gone down. So how much it has gone down? That is what they are asking. And they are saying that this displacement is proportional to 1 minus cos theta. So if it is so, you can also mark D. Okay, thank you. चलिए guys, discuss करें. I think it's time we discuss this. पहला point, the midpoint of the bar will fall vertically downward. So how many of you saying this is correct? पहला ऑप्शन कितने लोग कहना चाहते हैं करेक्ट है? That the midpoint will fall vertically only. Yes, that's obvious. Why it is obvious? Let me explain. कि क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं रॉड पे इन द टिल्टेड पोजिशन ऑल्सो. तो सेंटर पे mg ऐसे लग रहा है. What else? Normal reaction from the ground. But even that is vertical. Normal reaction always acts perpendicular to the surface. So that means both the forces are vertical only. All the forces that are acting on the rod are vertical. And the surface is smooth, frictionless. तो friction तो होगा नहीं. तो अगर सिर्फ vertical forces लग रहे हैं, if only vertical forces are acting on the rod, that means the center of mass can only be displaced in vertical direction. How can it have any horizontal movement? There cannot be any horizontal movement for center of mass. तो yes, it will fall vertically only. तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है. सेंटर ऑफ मास फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड. अब बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पॉइंट ए, कि पॉइंट ए की जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या है. तो इफ यू वांट टू गेट द ट्रेजेक्ट्री देन हाउ वुड यू डू इट? सो यू गेट द डिस्प्लेसमेंट. एक काम करते हैं, इसे ओरिजिन मान लेते हैं. दिस इज आवर ओरिजिन. From here I will be looking at 0, 0. तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ A का? तो आप बोलेंगे एक तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका X में इतना, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ Y में? तो दैट इज दिस मच. इतना ये पॉइंट A गया Y में. तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे पास. अगर इन X और Y को मैं रिलेट कर लूँ, आई विल गेट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ पॉइंट A. तो X की वैल्यू कितनी है? अब ये तो ईजी है क्योंकि ये मिड पॉइंट है यहाँ पे और ये एज है. तो ये डिस्टेंस तो l/2 ही होगा, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड. दिस इज l/2 डिस्टेंस. तो अगर ये l/2 है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे, सो यू कैन इजीली गेट दी हाइट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल. तो x की वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है? x की वैल्यू हो जाएगी l/2 हाइपोटेनस एंड योर टॉकिंग अबाउट परपेंडिकुलर, सो l/2 साइन थीटा. ये इक्वेशंस आपको क्लियर होगी, राइट? ओके सर, आई डू नो हिंदी सर, से इन इंग्लिश. यू डोंट नो, यू आर सेइंग in English please. Okay, so I'll repeat wherever possible. So point A trajectory we have got, x value, y value, x value we have obtained now. Now if I get the y anyhow, I'll going to relate it with x and I'll get the trajectory. So how to get the y? Can anybody suggest me कि y का value कितना?
So let us do one thing. Let us calculate the position of point A from ground, that how much high is the point A from the ground. If we get to know that, we'll be able to solve. So this height, can I find that how much is this height? Yes, I can do that. I can take the bigger triangle. The whole rod will behave like hypotenuse and this will be the bigger triangle. Okay, so bigger triangle mein let us get this value, so this is L, this angle is theta, then this angle is theta. Everyone agree? No, wait, that's not theta. Theta is from vertical. I'm so sorry, that is not theta. If this angle is theta, by vertically opposite angle, this angle is theta. Then this is 90 degree, this is 90 minus theta, then it's 90, so this is theta. So now this is theta, the hypotenuse is L, and what do you need now? Now you need the base. Base of the triangle is what you need, the bigger triangle. Okay, so how do you get the base of this triangle? So you just apply cos theta in that bigger triangle. Cos theta is this height that I need, let me call it Z, Z by L, because that other side AB of that triangle is length of the rod. तो हमारे पास Z की भी वैल्यू आ गई, L cos theta. लेकिन अब y क्या है? What is y? So I have the Z, I need the y. So from this complete L, let me subtract Z, so I get the remaining y. तो y का value मेरे पास आएगा, it will be from the L subtract Z, that is L cos theta. तो ये मेरे पास y का value है, and then here I have the x value. You try to just combine them. How would you combine them? Get the values of sine and cos. Sine और cos का यहाँ पे value निकाल लीजिए, and then square and add sine and cos. Okay, so if you're going to square and add, you will going to get the equation of an ellipse. तो A की जो trajectory है वो ellipse आएगी, ना कि parabola. जी सर, मैं भौतिकी में अधिक अंक कैसे प्राप्त करें? कर सकते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, ना कि बस आंसर कुछ क्वेश्चंस का निकालने के. कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तो क्वेश्चंस अपने आप होंगे. ओके, सो एलिप्स आएगा पॉइंट ए का, राइट? सो बी ऑप्शन इज रॉन्ग, बी इज नॉट करेक्ट. इंस्टेंटेनियस टॉर्क अबाउट द पॉइंट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसके अबाउट जो टॉर्क है दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा इज व्हाट इट इज सेइंग. तो जरा बताएंगे, एक नया डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, बेटर होगा. आई विल टेक इट हियर. सो रॉड ऐसी सिचुएशन में, और इनिशियली कैसे थी रॉड? इनिशियली इट वाज वर्टिकल, इस तरह से थी. So they are saying in this new position, what is the torque about the bottommost point? Bottommost point के about torque क्या है? Instantaneous torque. तो एक तो normal reaction on the rod in tilted position by the ground. mg तो यही center है because center is along the vertical line. So that is there. What is this length? Well, this length is L by 2. So about the point here, which is I think they called point B. पॉइंट बी के अबाउट टॉर्क किसका आएगा? एंड दिस एंगल इज थीटा. सो टॉर्क नॉर्मल रिएक्शन का तो कोई होगा नहीं, नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो टॉर्क, द ओनली टॉर्क विल बी ऑफ mg. तो टॉर्क कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू फाइंड द टॉर्क? सो यू फाइंड द टॉर्क बाय दिस कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स का वो निकाल लो पॉइंट से. सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा, यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन mg. तो इसकी वैल्यू कितनी? L by 2 साइन थीटा. तो बस टॉर्क की वैल्यू क्या हो गई अबाउट पॉइंट बी? टॉर्क अबाउट पॉइंट बी इज L by 2 साइन थीटा, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टाइम्स mg. सो देखिए टॉर्क प्रोपोर्शनल हो गया साइन थीटा के अबाउट द पॉइंट बी. सो इंस्टेंटेनियस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. तो ये जो हमारा सी ऑप्शन था ये करेक्ट हो जाएगा फिर. तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. इंस्टेंटेनियस टॉर्क is in fact proportional to sine theta. So C option correct. So far how many we have got? A correct, C correct. अब D option आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बता देता हूं, सेंटर के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है. How much the center has displaced. So सेंटर के डिस्प्लेसमेंट का भी देख लेते हैं. Let's go back to here.
So how much has center moved from initial to final position? तो फिर से rod की initial situation was like this, finally it starts to fall down. तो कैसी लगेगी rod? ऐसे. This is still the center. तो हमें ये मूवमेंट पूछा क्योंकि पहले सेंटर कहाँ था? पहले सेंटर यहाँ था. This was the center initially at the mid of the rod. Now it is here. So we are being asked this movement कि ये जो सेंटर की डिस्प्लेसमेंट हुई ये कितनी हुई रॉड की. ओके, सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर? बिल्कुल कर लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डोंट वरी. हेलो विजय. ऑलराइट गाइस, लेट्स फाइंड दिस डिस्टेंस. कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस? तो देखिए फाइनल हाइट निकाल लेते हैं ग्राउंड से कितनी है अभी. तो अगर ये L/2 है, दिस इज थीटा, then we know the final height of center from the ground is L/2 cos. And what was the initial height? Well, initial height of the center was L/2. It was at half the rod length before, right? So if you need the displacement, if you need this y, the movement in displacement in the center, तो कैसे निकालेंगे? From L/2 subtract L/2 cos theta. So the displacement of center of the rod is L/2 minus L/2 cos theta. So that means the displacement is proportional to 1 minus cos theta. That's actually correct. So fourth option भी correct हो जाता है. D option is correct, that the displacement of center is proportional to cosine of theta, 1 minus cosine of theta. So D option is correct, although unfortunately you were not able to see it. So ये question clear सबको? Everyone was able to understand this? Okay, let's go to the next then. Yeah, there was frictionless ground. Okay, the ground was frictionless. Sir, if rod rotating and it's moving ahead, then center of mass भी shift होगा. So yes, Drishti, I hope your doubt is clear now. The center of the rod did not move because कोई horizontal force ही नहीं था. Understood, Drishti? Okay, so चलिए, let's go to the next question then. So next, fluid mechanics easy. हाँ, fluid mechanics हो सकता है. दृष्टि समझ में नहीं आया. You did not understand, दृष्टि? See दृष्टि, there are no horizontal forces. Tell me, क्या कोई horizontal force लग रहा है रॉड पे? नहीं. mg नीचे लग रहा है देखो, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे ऊपर. मुझे बताओ दृष्टि, हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है यहाँ पे? बट सर रॉड इज मूविंग अहेड. देखो रॉड अहेड मूव नहीं करेगी. देखो कैसे गिरेगी दृष्टि, अगर ये ऐसे है रॉड तो देखो ऐसे गिरेगी, ऐसे ऐसे गिर रही है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उसका जो सेंटर है वो तो इस लाइन में ही आ रहा है हमेशा. हमेशा जो रॉड का सेंटर है वो इस लाइन में ही रहता है. रॉड भले ही अगर आप बोल रहे हो कि ये इधर जा रही है, तो मैं आपको क्लेम कर रहा हूँ कि उतना इधर भी तो जा रही है. सो लेफ्ट और राइट हमेशा बैलेंस्ड है, सेंटर हमेशा मिड में फॉल कर रहा है. ओके, दैट्स हाउ इट इज. फोर्स से समझो, फोर्स, इफ देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, हाउ कैन सेंटर मूव हॉरिजॉन्टली? सो इजी एज दैट. Sir, say in easy way. Yeah, I have said in easy way that there is no horizontal force, so no horizontal movement, just vertical movement of center, no horizontal. That's it. Sir, when will we start question discussion of KTG and thermal expansion? Today we have a question of thermal expansion, Sunita. We are having it today, so you just wait for it. Okay, let's go to the next problem. What do you expect the next problem to be from? Which topic? क्या कोई guess कर सकता है? Which topic it will be? The next problem. So here is the question. This is the problem. I hope you are able to see it completely.
Okay guys, I'm waiting for you to solve. Yes, we'll do that, Shruti, that as well, vertical circular motion. We'll try. Okay, so in this question also you might be only able to see A, B, C option, but don't worry, we'll do the D option also. I'll tell you what is D option. AB is what you are getting. Okay, so Sunita is getting A and B. इसमें तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन में, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है. जेई एडवांस वाज क्वाइट ब्रूटल इन गिविंग यू दिस क्वेश्चन. इट वाज क्वाइट ब्रूटल बिकॉज इसने ऐसा एक कॉन्सेप्ट पूछ लिया कि जो आपको पता होते भी आपसे मिस्टेक हो सकती है. तो चलिए सॉल्व करें या यू नीड सम टाइम. सर आई गॉट बी एज आंसर, यू गॉट बी. ये कौन सा टॉपिक है? देखो वेव्स की बात हो रही है ना, पल्स हैज बीन क्रिएटेड, सो इट्स अ वेव्स टॉपिक. वेव्स का क्वेश्चन है, ट्राई करिए. नीड टाइम सर. ओके शिवा, टेक योर टाइम, सॉल्व इट. आई होप अदर्स आर ऑल्सो सॉल्विंग. How does this come under mechanics? Because waves comes under mechanics only. पूरा जो 11th है, that's all mechanics. Mechanics is not only till rotational. After all, in waves also, particles are doing motion. So that SHM, that simple harmonic oscillation, that comes under mechanics only. Sir, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है. I think others are able to see. I found the answers to be B and C. Okay, that's what Shiba is saying. So guys, let's discuss then. Alright, let's read the question first of all. Block of mass M is hanging at the bottom of the rope. Rope is also having the weight. That is the point to be understood here. कि अपना उसका खुद का भी mass है. Alright, it is also having its own mass. Constant mass per unit length. The top end of the rope is attached to a fixed rigid end. So tell me one thing, if I compare two ends of the string, when I compare here and when I compare here, these are the 2 points A and O. Can you tell me what will be the force on that string? तो अगर मैं O point की बात करूं, so it will be having weight of both the rope and the block below it. Point O तो feel करेगा कि पूरा नीचे से दोनों खींच रहे हैं उसे. Even the rope weight is there and even the block mass M is there. Both are pulling it down. So at O, there will be more force. And what about at point A? Well, at point A, the force will be relatively lesser because point A will only feel weight of capital M. It will not feel the weight of the whole system. Are you understanding? Point A will only feel the weight of block capital M, not of the rope. Rope uske upar hai. So that means force at A is less than force at O. I can write here. Force at A is less than force at O. That's one thing we have got. Now what they have talked about? Well, they have talked about the wavelength, right? Wavelength also they are talking about in the C option. The wavelength of pulse 1 becomes longer when it reaches point A. They are saying the wavelength increases of this pulse when it reaches here at point O, at point A. So why would it become longer? Let's say why at all it will even change? Because velocity of pulse. What is velocity of pulse? V. V equals F lambda. Frequency of pulse can never change, but velocity and wavelength can adjust, right? So velocity and wavelength are adjusting. Now tell me, if pulse 1 reaches to point A, will its velocity increase or decrease? Will its velocity increase or decrease? अगर pulse यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, so velocity will increase or decrease. So you must remember the question. You must remember the formula of wave speed. Wave speed is given by root
of f over mu. Do you remember this formula? Speed of wave in a rope. रोप में वेव की जो स्पीड होती है that is proportional to the square root of force in it, force at a point. So obviously अगर force A पे कम है, if A is having less force, that means the speed is also less at point A. So I can write here from there, speed A is less than speed at O. At O speed will be higher, and if speed at A is less, then wavelength at A also has to be less. Lambda A must be smaller than lambda O. So wavelength क्या होता है? Decreases. But C option is telling you what? C option says it becomes longer. गलत बात. तो C option तो गलत हो गया. So how many of you are saying C option? C option is wrong straight away. Wavelength actually decreases. Yeah. So that's how you have to look at it. Now, what about the option A? Well, no doubt it's decreasing, but obviously the time that the pulse 1 takes to reach from here, the same time this will take to reach over there. Time में तो कोई change नहीं होना है, isn't it? Right? So time period तो same रहेगा, तो A option तो correct है guys. A option doesn't change. How much ever time it takes to travel down, the same it takes to travel from bottom to up. So A option correct. अब B ऑप्शन पे आ जाते हैं. The velocity of two pulses are same at the midpoint. अब ये था ब्रूटल ऑप्शन, इसी को मैं कहता हूं ब्रूटल ऑप्शन. क्यों? क्योंकि जब आप देखेंगे कि वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, आप बोलेंगे सर फोर्स तो सेम ही होगा दोनों के लिए, चाहे ये रोप यहाँ पे आए सेम फोर्स, और वेदर दिस पल्स कम्स हियर सेम फोर्स वुड बी देयर, सो इट मस्ट बी सेम. तो जेई ने इतना आपको डिटेल में टेस्ट किया कि स्पीड सेम होगी बट वेलोसिटी नहीं. क्यों वेलोसिटी सेम नहीं? बिकॉज एक पल्स जारी होगी ऊपर, पल्स 2 वुड बी गोइंग अप while pulse 1 would be going down. Even if their speed is same, उनकी स्पीड अगर सेम भी है, speed is v only, but velocities are not same. Are you getting it? Velocities are same only if direction is also same. तो ये brutal सा ऑप्शन था ये मेरे हिसाब से, तो B वाला. B is actually wrong. Speed is same, velocity is not. Yes. So now comes the D option. The velocity of any pulse along the rope is independent of its frequency and wavelength. What do you say? D option is saying the velocity of any pulse along the rope is independent of its frequency and wavelength. That is absolutely true, because velocity only depends on force and mass per unit length. V is root f by mu. Speed only depends on force in the rope and mass per unit length of the rope. It doesn't depend on frequency, wavelength, it doesn't care about that. So D option भी correct है. Yeah, so you could not see D, but I have given you the option. Option D talked about the speed of wave depends on frequency and it is independent of frequency and wavelength. Yes, it is independent because it only depends on force and mass per unit length in a rope. Can you explain the D option? Yes, I have explained that force velocity only depends on force and mass per unit length mu, not on frequency and wavelength. देखो A तो मैंने easily समझा दिया है that both pulse is same only, whatever it takes to go up, same it takes to come down, and other options I have explained. So चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's go to the next problem. What do you expect the next problem to be? Which topic guys? कौन सा topic expect कर रहे हैं अगले में? Dynamics, gravitation. Shiva wants gravitation, but question है ये आपके सामने. So somebody was talking about thermal expansion. Here you have the question now on thermal expansion. So try guys.
Yeah, so Sunita got the question of thermal expansion because she was waiting for it. देखते हैं जयंती if next will be that, we'll see. Solve this, guys. It also has properties of matters in it, right? It's talking about expansion due to stress also, because if you're hanging a block, so that expansion is due to stress. M equals 9 kg. No, Shiba, that's wrong answer. So very hard. No, it's not hard. Nearly 3. That's what Surbhi is saying. Jayanti is saying 7. No, Jayanti, that's wrong. It's not 7. Others, do you get any answer for this? Shiba saying 6. No, it's not correct. Sir, explain please. Okay, let's have an attempt from everyone, then we'll discuss. Okay guys, shall we solve? चलिए solve करते हैं. तो question में क्या दिया है, that there is a block which is hanging through a steel wire. तो समझ लीजिए कि ये वो steel wire है and through that we are hanging the block. So can you tell me, due to the stress, how much extension would happen in the wire? How much extension would happen due to the stress? So you know the stress का formula, Young's modulus वाला. Young's modulus is stress over strain, delta L by L. So can you tell me what will be the value of delta L here? तो delta L का यहाँ से value आ जाएगा, you can say F into L AY. That's the value of extension, right? Now what will be the force F? Isn't the force F the weight of the block? Weight of the block ही तो force है जो wire को खींच रहा है नीचे, right? So that means we would going to have it as mg. Force का यहाँ value क्या है? mg. The weight of the block, that's mg. So this extension must have happened. ये extension हो गया, लेकिन अब क्या किया? Question is saying it is cooled down from 40 to 30. अब हमने उसको cool down kiya, we taken the heat out of it, we reduce its temperature. So we all know if you increase the temperature, expansion hota hai. If you decrease the temperature, contraction happens, right? So here contraction would happen and the wire regains its natural length. Regain matlab jitna delta L yahan pe tha, the same negative delta L would happen through contraction due to temperature. So वो कैसे दिया जाता है, क्या आप बताएंगे अब कि थर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा एल कैसे देते हैं? चेंज इन लेंथ, अल्फा एल डेल्टा टी. याद आया? अल्फा इज कोएफिशिएंट फॉर लीनियर एक्सपेंशन, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर. सो व्हाट यू नीड टू डू नाउ, द एक्सपेंशन ड्यू टू दिस शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन हियर. तो दोनों को इक्वेट कर देंगे. अल्फा एल डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू FL over AY. That's all. तो L से L cancel हो जाएगा. That's why they did not even give the length of the wire. And what will be F? mg. A क्या होगा यहाँ पे? A is the cross section area of the wire. Wire is cylindrical, right? तो इसका cross section area क्या है? A. वो pi r square होगा. A is pi r square because cylinder का cross section area हमेशा circle होता है. So answer is 3. Yes, answer is 3. The answer for this question would be 3. M would come out to be 3. You would have to approximate. It will not be exact 3, लेकिन approximate करोगे तो 3 आ जाएगा. So this kind of question can easily be asked in mains. Mains में अब जो integer type आने वाले हैं, new type of questions, you can easily see this in that. Sir, I am getting 31.4. Drishti, you might would have done some conversion mistake.
जैसे यहाँ पे मिलीमीटर्स था रेडियस, कहाँ गया? द रेडियस ऑफ द वायर इज मिलीमीटर्स, डिड यू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स फर्स्ट? तो रेडियस का वैल्यू क्या होगा? रेडियस का वैल्यू होगा 10⁻³ मीटर्स। मिलीमीटर यही होता है ना, 10⁻³ एंड देन यू स्क्वायर इट फॉर एरिया, एरिया में उसको स्क्वायर करोगे आप, ओके, दैट्स वाई। सो देन यू विल eventually get 3 only, don't worry. And alpha is 10⁻⁻5. I hope you have noted that as well. This is 10⁻11. तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम किसके मन की होगी विच टॉपिक इट विल बी। ठीक है, मैं खुद भूल गया कि अगला क्वेश्चन किस टॉपिक पे था, मेरे लिए भी सरप्राइज होगा। चलिए देखते हैं, तो लेट्स सी क्या हो सकता है। Let me put the next question on. Okay, Doppler effect, मजा आएगा आपको। Doppler effect पे अगला क्वेश्चन, क्योंकि हर साल जेई में एक क्वेश्चन आता है Doppler effect पे। Doppler effect पे क्वेश्चन है गाइस। Have you all done Doppler effect in your school? No? But please try anyhow, कोशिश करिए इसको करने की। Please try this problem. Nobody has tried Doppler effect in their school. So those who have tried, they can try. No. अरे डॉपलर इफेक्ट किया नहीं, सो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। विच सब्जेक्ट? इट्स फिजिक्स आदित्य। डायनामिक्स, दिस इज जेई एडवांस 2019। नो, दिस इज जेई एडवांस 2018। आंसर 5 हर्ट्ज। देखो सब पता है गट्टू को। Change question. So you guys don't want Doppler effect, maybe you have not completed. Okay, so maybe I'll discuss this in some other class because most of you here have not done Doppler effect. तो फिर कुछ dynamics के question ले लें। Shall we take dynamics question, because Suresh was asking from long time कि sir dynamics में कुछ कराइए, please make us do something in dynamics. So sir torque पे तो आदित्य अभी एक question था, just now we did a question on based on the rod पे based। चलिए एक अभी मेरे माइंड में क्वेश्चन है, let's solve that, उसको सॉल्व करते हैं। so बड़े ध्यान से सुनिएगा, I won't be able to repeat because आपको बड़े ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहां पे एक मासलेस रॉड है। दिस इज अ मासलेस रॉड और यहां पे रखा हुआ है एक ब्लॉक पे अभी ये मासलेस रॉड है। दिस इज अ क्यूबिकल ब्लॉक, लग तो नहीं रहा है, चलिए इसकी लेंथ में दे देता हूं b इज द हाइट ऑफ द ब्लॉक। और ये रॉड को अभी मैंने होल्ड किया हुआ है। अब रॉड इज मासलेस बट एट द एंड ऑफ द रॉड आई हैव कनेक्टेड अ स्फीयर। इसके एंड पे आई हैव कनेक्टेड अ स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m और ब्लॉक का मास है कैपिटल M। द सरफेस इज स्मूथ। इफ देयर इज स्मूथ सरफेस ऑब्वियसली सिस्टम कैन नॉट रिमेन स्टेशनरी। तो क्या है कि अभी मैंने रॉड को होल्ड किया हुआ है, आई एम होल्डिंग द रॉड राइट नाउ एंड राइट नाउ द एंगल इज अल्फा। अभी जो एंगल बना रही है रॉड दैट इज अल्फा। But all of you know eventually what would happen when I release the rod. If I release the rod, what would going to happen? This rod will fall down, the block would move forward, isn't it? तो नई पोजीशन क्या हो जाएगी? How would the new position of the rod be? So जो नई पोजीशन होगी वो something like this. Maybe I'll draw a diagram below it. देखो नई पोजीशन ऐसे हो जाएगी. The block would have moved forward, and now the angle it is making is beta. And right now it would have gained some velocity v,
isn't it? Everyone agrees with it कि इसने अब v velocity gain कर ली. The angle is beta now. You have to tell me this velocity कि block कितनी velocity gain करेगा. There is no friction. Is the rod supported at the center in the beginning? Initially we were holding it. Initially we were holding the rod and then we released. So when we released, block started to move forward. देखो block ऐसे आगे आ गया, rod नीचे आ गई, rod came down. So what is the speed of the block now? Right now what is the speed? At this instant, what is the speed of the rod? 25 meter per second. Great, Jayanti. मैंने कोई value ही नहीं दी. I have not given any values. The answer would be dependent on m, v, alpha, beta. सब पे depend करेगा answer. You can't get a numeric answer. Exactly. No, rod is not supported. We were holding it obviously and then we released. Initially हमने hold किया हुआ था. Hold. We held the rod initially and then we released. So then the movement started. "25 meter per second. No, how can you get a numeric answer? I have given no values. Alpha, beta and all would be there in it, right? सोचिए जरा कैसे करेंगे? And I also need to give you the length of the rod. देखिए length of the rod भी दिया हुआ है. The length of this rod is L. ये भी एक डेटा मैं आपको दे देता हूँ because this will be required. Tell answer. Answer is quite huge, so I cannot give you the value right now. It's a huge answer. Conservation of mechanical energy. हाँ, that will be the first step. देखिए conservation of mechanical energy first step होगा. जरा बताइए कि center कितना नीचे आ गया होगा. If right now the center was here and finally it is here, it would have come down at certain level, right? तो हमेशा ये distance तो कितनी रही होगी center की? How much would have been the distance every time? L by 2. अभी भी L by 2 है this distance. So what is the reduction in the height of center? Initially ये कितना ऊपर था? तो perpendicular of the triangle. और अभी भी कितना ऊपर है? The perpendicular of the triangle. So the new height of the center is L by 2 sine beta. Everybody can see this? Center is at L by 2 sine beta height, perpendicular of this triangle. And initially कितना था? L by 2 sine alpha. So what is the change in potential energy? The change in potential energy is mg L by 2 sine alpha minus sine beta. This is the change in potential energy. Everybody understood this? Okay. No, तो height देख लो triangle की हमेशा perpendicular निकाला. I think you can find that perpendicular to height. तो ठीक है. This is the change in potential energy. Where did it go? Where did all this energy go? ये energy आपकी कहाँ चली गई? ये बताइए. अच्छा wait a minute, I just forgot कि rod तो massless है guys. हमें इसका height लेना था. I am so sorry. तो L by 2 से लेना देना नहीं है क्योंकि center उसका तो कोई mass है ही नहीं guys. None of you mentioned कि सर आपने rod तो massless दी हुई थी. You could have reminded me. So it's not about the center of the rod, it's about the sphere at the edge. तो फिर तो L by 2 हटाओ. It will be just mgl. That's all. क्योंकि जो लेंथ हम कंसिडर करेंगे दैट विल बी दिस. तो यहाँ वाला हाइट देखना पड़ेगा हमें. दिस वन, दिस हाइट हैज टू बी कंसिडर्ड कि मास m का हाइट कितना चेंज हुआ. दैट इज अ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? या सो दिस इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी नाउ एंड दिस हैज गॉन इनटू टू पार्ट्स. कौन से दो पार्ट्स हैं? एक तो ये ब्लॉक मूव करने लग गया, सो हाफ कैपिटल M v स्क्वायर, और रॉड भी तो रोटेट करने लगी. द रॉड स्टार्टेड टू रोटेट omega. So pure rotation is happening about that hinge.
So you will write half I omega square rotational kinetic energy. And what is the moment of inertia? तो यहाँ पे रॉड का तो कोई मास ही नहीं है, द मास इज ऑफ ओनली एट द पार्टिकल एट द एज. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस पार्टिकल का? ml स्क्वायर. तो यहाँ पे I का क्या वैल्यू है? ml स्क्वायर. दैट इज द वैल्यू ऑफ इट. तो अभी एक इक्वेशन आई है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन की. वेयर टू गेट दी अनदर इक्वेशन, क्योंकि दो वेरिएबल हैं ओमेगा एंड वी. कैन यू टेल मी हाउ वी एंड ओमेगा आर रिलेटेड? वी और ओमेगा कैसे रिलेटेड है? Aren't we think of friction between rod and block? No, there is no friction. Yeah, it will fall down because of the sphere on the rod. Yes, exactly. So what about V and omega relation? V and omega are related in what way? तो ये अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है. नहीं, गलती कर दी. What is R? What is R here? रेडियस क्या है? तो देखिए आप बड़े ध्यान से सुनिएगा. This is a very important concept. Whenever you define omega and V, that V is always the tangential velocity to the circle. Okay? तो अब यहाँ पे जो ब्लॉक की वेलोसिटी है वो तो हॉरिजॉन्टल है. लेट मी नाउ रिमूव दिस एंड एक्सप्लेन यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. जरा सिचुएशन देखिए यहाँ कैसा होगा. द सिचुएशन वुड बी, इफ यू टॉक अबाउट जस्ट द रॉड, यहाँ पे ब्लॉक कॉन्टैक्ट में, मान लीजिए द ब्लॉक इज इन कॉन्टैक्ट हियर. सो ब्लॉक तो क्या हो रहा होगा? ब्लॉक फॉरवर्ड जा रहा होगा लाइक दिस V. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट V इक्वल्स R ओमेगा, दैट V इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर टू रेडियस वेलोसिटी. सर्कुलर मोशन में हम क्या करते हैं? जब V इक्वल्स R ओमेगा बोलते हैं तो ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है ना रेडियस के. इफ दिस इज द रेडियस, दैट V इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट. अब ये V तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर है नहीं. सो व्हाट वी नीड टू डू देन? तो उसके कंपोनेंट्स लेंगे हम. एक रॉड, इसका कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर. सो इट्स नॉट द V दैट इज R ओमेगा, देन इट इज व्हाट? देन इट इज दिस कंपोनेंट. अब ये कंपोनेंट कौन सा है? तो भाई ये एंगल कितना था हॉरिजॉन्टल के साथ? फाइनली बीटा था. तो ये एंगल बीटा हो जाएगा. सो द कंपोनेंट वी आर टॉकिंग अबाउट इज V sin बीटा. तो जब आप लिखोगे V इक्वल्स R ओमेगा, वो परपेंडिकुलर वाला होगा, नहीं बीटा होगा, अल्फा नहीं, क्योंकि फाइनल पोजीशन बीटा है. तो आप लिखोगे V sin बीटा इक्वल्स R ओमेगा. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये R क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? ये जो लेंथ है ये कहाँ से लाएंगे? तो मैंने कहा था कि ब्लॉक की हमें हाइट पता है, द ब्लॉक्स हाइट इज B. तो अभी ब्लॉक यही होगा. तो ये B है आपका, ये बीटा है. तो B और R को रिलेट कर लो बीटा एंगल से. साइन बीटा, साइन बीटा इज B बाय R. तो आपके पास R आ गया. R इज B कोसेक थीटा, isn't it? So understood? So this was a good question in that sense. Constraint भी यूज हुआ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज हुआ. Everything was used in this. Okay, I hope the problem was clear. The important point you must understand, V equal R omega लिखते समय वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर वाली होती है, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेलोसिटी, वो लेना होती है. ओके, सो दैट्स इट गाइस. इसे हटाते हैं. जस्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. राइट, लास्ट एक और क्वेश्चन. तो बताइए क्या क्वेश्चन करें, किस टॉपिक पे? जल्दी बोलिए. What topic we should take? If I have some question in my mind, won't be point of contact of rod and surface is shifted further? Yes, it was shifted. Gravitational. Pseudo force का तो देखो पूरा लेक्चर किया लास्ट टाइम. हाँ, तो ग्रेविटेशन की आप लोग बात करें. ठीक है, ग्रेविटेशन में मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, चलिए कर लेते हैं. द क्वेश्चन इज लाइक दिस. ये तो है आपका मदर अर्थ एंड देयर इज अ पार्टिकल विच इज गोइंग अराउंड, सैटेलाइट बोलना चाहिए. एक सैटेलाइट है जो कि R ऑर्बिटल रेडियस में सर्कल अराउंड कर रहा है. देयर इज अ सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड, इसका मास m है. मास m सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. स्मॉल r इज इट्स रेडियस. अब हमने क्या किया, इस सैटेलाइट को
we want that it escapes into oblivion. समझते हैं escape into oblivion मतलब ये escape कर जाए अर्थ के gravitational pull से. I want to eject this satellite so that it completely escape कर जाए यहां से. तो बताएंगे कि मुझे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी सैटेलाइट को. हाउ मच वेलोसिटी आई मस्ट गिव दिस सैटेलाइट सो दैट इट एस्केप्स. हाउ मच वेलोसिटी आई मस्ट गिव टू अ सैटेलाइट दैट इज इन अ ऑर्बिट ऑफ आर सो दैट इट एस्केप्स द सिस्टम. Escape velocity root 2 gr. But Shiva, that is from Earth's surface. Now we are not talking about Earth's surface. Now we are talking about a satellite that is already in orbit. So for that, escape velocity will not be same as that on the Earth. Okay, it will be different. If you are understanding, the answer is not escape velocity because that is from surface of Earth. Right now, I am talking about a satellite that's already orbiting there, and that you want to escape. To escape, it want velocity greater than escape velocity. Find its value. Try that how much velocity would be needed for that satellite to escape. Suresh, try to understand. Suresh, 11 किलोमीटर पर सेकेंड अर्थ के सरफेस से होती है. अभी सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पे नहीं है, तो इसका आंसर एस्केप वेलोसिटी नहीं है. वो अर्थ के सरफेस से होता तो निकलता. अभी सैटेलाइट है ऑलरेडी वहां पे, उसको एस्केप करना है. इट एस्केप विद हाइपरबोलिक पाथ. तो देखिए किस तरह एस्केप कर रहा है उससे मतलब नहीं है ना, आप एनर्जी से सॉल्व करिए. सो इट डजंट मैटर इन व्हाट पाथ इट एस्केप्स, बस हमें तो एनर्जी से करना है इसे. आई एम चर्चित. ओके चर्चित, सो आई होप यू अंडरस्टूड कि एस्केप वेलोसिटी आंसर नहीं है. तो सॉल्व कर लें फटाफट क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है. तो एस्केप वेलोसिटी जब हो जाती है, मतलब जब भी कोई पार्टिकल एस्केप कर जाता है तो उसकी फाइनल एनर्जी क्या होती है. और मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी है. मिनिमम ऐसा कि जस्ट इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, जस्ट पहुंचे, वहां जाके रुक भी जाएगा तो चलेगा. जैसे ये समझिए कि कोई एक रेस हो रही है और रेस में आपको गाड़ी में इतना ही पेट्रोल डालना है सो दैट इट जस्ट रीचेस द फिनिश लाइन, बस उसके आगे मुझे मूव नहीं कराना. तो मैं बोलूंगा इन्फिनिटी पे जस्ट जाके रुक जाए, सो दैट्स फाइन फॉर मी. ओके, ऑलराइट. Now how much speed I must give it? So energy conserve करते हैं. Let us conserve the energy. Right now, what is the energy of it? इसकी energy कितनी है? So अभी इसकी energy है देखिए -gmm over r, क्योंकि अर्थ से कितने डिस्टेंस पे ये r, और ये बाय द वे r सेंटर से था, राइट. ऑर्बिटल रेडियस मैंने कहा था, तो ऑर्बिटल रेडियस सेंटर से होता है. सो नेगेटिव gmm by r is its potential energy right now. It also has kinetic energy, half m v orbital square, right? v orbital आपको पता ही है ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, √gm/r. तो यहाँ पे हाफ m v0 स्क्वायर भी है इसके पास. ये तो इसका इनिशियल स्पीड हो गया. अब इसके अलावा मुझे भी तो अब इसको कुछ स्पीड देना पड़ेगा बिकॉज दैट इज द ऑर्बिटल स्पीड. आई वॉन्ट टू गिव इट सम स्पीड सो दैट इट एस्केप्स, राइट. So I am saying I have also provided it with some v speed now. So that energy is also here plus half m v squared. ये एनर्जी इसे मैंने दी. तो ये एनर्जी देने के बाद फाइनली इसकी एनर्जी क्या हो गई? What is its final energy? जब ये इन्फिनिटी पे चला गया 0. आंसर आ जाएगा, आपको v निकालना है. Understood? I'll repeat again. This energy satellite already had, but it was negative total. Total energy हमेशा एक bounded system की negative होती है. So it was already bounded system. So you gave extra energy to it, so that it escapes. Final energy becomes 0. So that's it. Okay, I hope everybody understood this problem. Solve करिएगा, जो भी आंसर होगा निकालिएगा. अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे. अगला लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स पे. हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड? फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड्स के क्वेश्चन करेंगे अच्छे. ओके, फ्लूइड्स वी आर डूइंग नेक्स्ट टाइम. ओके,
तो मिलिएगा, आई विल बी मीटिंग यू ऑन सैटरडे और फ्राइडे आई गेस, चेक कर लीजिएगा, सैटरडे आई थिंक, सैटरडे में आपसे मिलूंगा अब। चलिए, सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज, गुड नाइट, बाय बाय।